Hello. Which crystal are we going to talk about today? Today we are going to talk about one of my most favorite crystals, rose quartz. Oh, Do you know why is rose quartz one of my favorite crystals? why? Because rose quartz is one of those crystals which can be used for your businesses, for your family, for your personal life, for your health, and for many other purposes. And it is one of those crystals which does not emit any harsh energies or any such energies which are harmful for the other person. So it is one of the most loving soft energy crystals. So it is my one of my favorites. And as you can see, there are many forms available of this crystal. देर इज़ अ रॉ क्रिस्टल. एज यू कैन सी ये एक रॉ फॉर्म है. रॉ मतलब जैसे वो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको जब उसी फॉर्म में हम प्रिजर्व करते हैं. फिर एक रॉ का पॉलिश्ड फॉर्म होता है. दिस इज ऑल्सो रॉ पीस बट इट इज़ पॉलिश्ड. सो यू कैन सी द डिफरेंस. देन देर आर स्पेयर्स, different shapes, different sizes, different shades of it. This is more pink, this is a light pink. Then there are bracelets, there are chips, tumbles, then there are jewelry forms. These are some basic things, the pendants, but there are rings of rose quartz, there are earrings, and there are necklaces all made of beautiful rose quartz. Then these are the bracelets, the basic one. Then you can see there are face rollers which are very much in trend and they are actually super beneficial for your skin. Then there are these animal figurines. This is a horse, there are ducks. This is one of the most commonly used rose quartz form in form of mandarin ducks. These are super helpful when you want to mend relationships and when there are young people, those who are looking for their they want to attract a new relationship in their life, or they want to get married. So these are the mandarin ducks. There is a female and there is a male duck represented. There are many shapes and sizes available of these. You can keep this in your southwest direction of the bedroom of the person who is finding a soulmate. Or if there is no southwest, then they can keep it in besides their bed. Besides the bed. This is actually a helpful tool. So this is a super powerful tip if there are couples, those who are facing any trouble in their marriages, or there is some kind of frequent quarrel going on between the couples. So you can place a mandarin duck made of rose quartz at your bedside, or if there is southwest direction possible, then in that direction. Then this is one of the most unique products which I find very quite beneficial. This is a perfume bottle or the attar bottle made of rose quartz. There is space, so you can keep this filled with rose attar or pure rose oil, and then you can keep this in your living room, or this also can be kept in the bedroom for person who are facing any kind of trouble in their relationships, or if there is any family quarrel going, or if there is any dispute going on in the family. This serves to be a very perfect tool. You just have to fill it with pure rose oil, essential oil or rose other, and keep it in the southwest. So also when you talk of rose quartz, it is quite beneficial if you are facing some kind of what do you say, some kind of, अगर आपको लगता है ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है आपके साथ, या you people are taking undue advantage of you, and then you can use these forms of crystals. If you can wear a bracelet, very good. If not, then you can use this, one of our unique products, a scrunchie and a rose quartz in it, and you can tie it in your hair, or you can just have it in your hand and you can go to your office or your workplace. So this will keep you protected. This will keep you away from the politics or backbiting you are going. It will soften the energies of the other people. This is very beneficial also for the students, those who cannot wear these things to school or to the college, so they can just have it in their hairs. Also you just name it and you have it. This is a rose quartz plate, as you can see. This is a special remedy. You can have your family picture at the back of it, and you can place it in your living room or in the southwest direction to enhance family relationship.
When we talk of rose quartz, it is not only when you have quarrels or you have some disputes in your home, then you can use rose quartz. You can use it as a tool to enhance relationship and as a tool to have loving relationship. This is a very powerful tool. A rose quartz plate with the photograph of family members. If it is not possible to have the photograph, you can have their names written and you can keep it. One more thing which I frequently suggest my clients is keeping a rose quartz ka sphere, a small one. This is a bigger one, a small one. Keep it in your water pot. जो हमारे घर का मटका होता है, हम उसमें इसको डाल दें. एंड फिर हमको लगेगा कि अगर हमारे घर में किसी बच्चे को एंगर इश्यूज़ हैं या किसी एल्डरली पीपल्स को फ्रीक्वेंटली बहुत गुस्सा आ रहा है और उसके कारण हमको तकलीफ हो रही है, तो वो पानी चार्ज हो जाएगा अगर हम इसको डाल के उसमें रख देंगे 7-8 आवर्स के लिए. देन यू कैन गिव दैट वाटर टू पीपल, टू द फैमिली मेम्बर्स फॉर ड्रिंकिंग, एंड यू कैन सी इट्स इफेक्ट. ऑल्सो देर आर फेस रोलर्स, ऑब्वियसली, जो आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं. ये हमको बहुत people find it very gimmicky, but it is not gimmicky. It is worth using and worth, you will see a difference in your skin. And what else do you want me to tell you about rose quartz? ये wand क्या है? Is this a wand, an angel or? It is a wand, but it has an angel on it. Angels भी आते हैं बहुत सारे फॉर्म में. तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बच्चे हैं या किसी को नाइटमेयर्स का प्रॉब्लम है, तो ये तो एक पूरा वॉन्ड है, बट यू कैन कीप अ रोज क्वार्ट्ज का एंजल एट द बेड साइड, तो दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम नाइटमेयर्स. इट इज़ यूजुअली फॉर डिस्पेलिंग नेगेटिव एनर्जीज. तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो हमने उसमें सेलेनाइट की वॉन्ड का बताया था. तो अगर हमको लगता है कि हमारे घर में कोई आया और उसके बाद घर में बहुत एनर्जी टेंस लग रही है या कोई चीज़ गॉसिप हो गया और वो चीज़ रोटेट हो रही है, तो यू कैन कीप इट with the intention कि it is flushing out. It will take away all the energies of whatever you think the disturbances in the household. You can use it for that. या अगर कोई लोग रेकी प्रैक्टिस करते हैं, कोई जीबू सिम्बल्स प्रैक्टिस करते हैं, जिनको नॉलेज है इन सारे सिम्बल्स का, तो यू कैन ड्रॉ दो सिम्बल्स विद इट, सो इट विल बी मोर पावरफुल. द एनर्जी कमिंग आउट विल बी मोर सॉफ्टर बट येट पावरफुल. ऑल्सो देर आर अदर फॉर्म्स. द ट्री इज देयर. ये एक बहुत पावरफुल टूथ होता है, इसको हम एक्सट्रैक्टर बोलते हैं. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पीस. ये बहुत बड़ा है साइज़ में, बट हमारे पास छोटे एक्सट्रैक्टर्स भी होते हैं. एज यू कैन सी इट इज़ फैसेटेड, मतलब ये पूरा फैसेटेड है और इसको एक पॉइंट है एंड बैक इसका फ्लैट है. तो यू कैन कीप इट. अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ एनर्जीज हमको डिस्पेल करनी है, या स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको न्यू रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, तो you can charge it, place it, and you can keep it with the intention of finding a perfect soulmate. And also when we talk of good relationship, it is not only the love aspect, but when you want to find a good colleagues in your business, या you want to find a good team, people of team, तो आप इसको अपने वर्क डेस्क पे भी रख सकते हैं. इट विल सेंड आउट दोज एनर्जीज कि आपके कोलीग्स या आपके साथ जो आपका स्टाफ काम कर रहा है, तो वो प्यार से काम करे और जो नेगेटिविटी वो डिस्पेल करे. इट इज़ वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टिंग. एज यू सी देयर इज़ अ टिप. तो जब भी कोई टिप वाली चीज़ होती है तो इट इज़ हेल्पफुल इन गिविंग आउट एनर्जीज. तो इट इज़ वेरी यूजफुल एंड ब्रिलियंट इन दैट. एंड नाउडेज आप देखेंगे बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स या प्रैक्टिसिंग थिंग्स, जब वो ऐसे स्टोन्स के चिप्स को विच आर रेडिली अवेलेबल, एंड दिस इज़ रोज क्वार्ट्ज, तो दे यूज़ इट इन दी फाउंडेशन. जब हमारे घर में स्लैब डल रहा होता है या टाइलिंग का काम हो रहा होता है, तब हम उसके बेस में रोज क्वार्ट्ज को डलवा सकते हैं. दिस इज स्पेशली हेल्पफुल व्हेन यू आर डूइंग द लिविंग रूम का टाइलिंग और द फ्लोर वर्क और द चिल्ड्रंस रूम का, किचन का, बिकॉज इट विल हैव दैट एनर्जी एंकर्ड फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन, एंड दोज एनर्जीज यू विल फील कि वो है और वो वैसा काम कर रही है. And then every crystal has many unique properties, many different uses. This is what you will get with the passing of the time, when you get used to the using crystals, when you start seeing their beautiful experiences. You will have crystals, then आपको लगेगा कि नहीं, हम crystals को बहुत सारे ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट ओनली keeping something and having a bracelet or a ring in your hand.
क्रिस्टल्स के बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में बहुत डिफरेंट यूजेस होते हैं. तो एंड क्रिस्टल्स आर मैजिकल. तो यू नीड टू start having some crystals with you, and then you can see the magic they have. दीदी, बट पीपल से कि हाँ क्रिस्टल रख दिया एंड इट विल डू द मैजिक. इज इट ट्रू? डू वी नीड टू चार्ज इट, मैनिफेस्ट इट, पुट एन इंटेंशन, क्लीन इट रेगुलरली, और या खरीद लिया एंड Like, this is the biggest misconception as a crystal consultant which I come across, that people think कि crystals एक स्टोन है या एक बहुत नॉर्मल सा कोई पत्थर है, वो हमने ले लिया और रख दिया एंड इट विल डू इट वर्क. नो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कोई पत्थर नहीं है. दीज आर स्पेशल प्रॉपर्टी होल्डर्स. मतलब उनमें अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है. जो रोज क्वार्ट्ज करता है वो एमेथिस्ट नहीं कर सकता, जो एमेथिस्ट करता है वो सेलेनाइट नहीं कर सकता. तो इनके पास अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो करते हैं. एंड द पॉइंट ऑफ दे डूइंग समथिंग फॉर यू एंड दे हेल्पिंग यू मैनिफेस्ट समथिंग, इट इज़ ट्रू. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड फेथ विद इट कि हाँ ये काम करेगा. आप सिर्फ इसको एक शो पीस जैसे रख दोगे तो ये काम नहीं करेगा. Cleaning is important, charging is important, putting an intention is very important. Sometimes you buy crystals from crystal consultants as we give to our clients. We charge it, we obviously charge it, it will work. But अगर आप उसको clean नहीं करोगे तो धीरे धीरे it will slow down. आपको लगेगा जो पहले 15 दिन में रिजल्ट आया, अब सेम रिजल्ट आने को 4 महीना लग रहा है. क्यों? क्योंकि आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हो. So you need to charge them, you need to clean them, you need to keep it in a good environment, then only they can work. So what we can do is, taking your question further, we can do is in the next videos we can talk how we can cleanse the crystals, and then how can we set our intentions in the crystal, and how can we reap the maximum benefits from the crystal by keeping them clean and putting our intentions. That will be awesome. Yes, and I hope that will be helpful to a whole lot of people, those who are starting the journey, crystal journey, or those who are very new in crystals. Crystals are magical. They are here to help us, but what we need is getting in the frequency of crystals and then working with it. So in the next videos we will try taking a video on how to cleanse the crystals. There are many different ways in which we can cleanse the crystal, and in the upcoming videos we will be showing more details on how to charge the crystals and how to put our manifestations in them, so that we all can have a beautiful experience with crystals. That is really really great. दीदी, आपने कहा selenite video was already there. Where can we watch the full video? The whole video is uploaded on our YouTube channel, Sacred Guidance. So you can go and watch it. It is a really helpful crystal, and also selenite is a wonderful crystal. So जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वो देखें. तो आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है crystals are something which are attracting you, so don't hold yourself back and connect with us, connect with the crystals and see the magic. Thank you. Thank you. Also do connect with us if you need to buy any of the crystals. All these crystals are available with us, and all our crystals go through 7 stages of cleansing and energizing. So if you need any of the crystals, please connect with us. Thank you.